Welcome friends to our series in conversation with Dr. S Srinivasan, जहाँ पे हम काफी बातें करते हैं जहाँ पे जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी हो सके। और आज का टॉपिक है प्रोकास्टिनेशन। वैसे तो प्रोकास्टिनेशन पे हमने 5 वीडियो बनाए, वो अपने आप में काफी हद तक कंप्लीट है, लेकिन ये सब्जेक्ट का डेप्थ इतना है कि जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि हमको रिजल्ट मिलने में अगर कोई बाधा है तो वो प्रोकास्टिनेशन है। तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी, जो फार्मा मार्केटिंग में काफी काम किए हुए हैं, एंड ही इज अ वेलनेस एक्सपर्ट आल्सो, एंड ही हैज रिटन ऑलमोस्ट 18 बुक्स। तो लेट्स हियर फ्रॉम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी, व्हाट इज दिस प्रोकास्टिनेशन। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और you can start your presentation. I am starting the screen share. So it is started, sir. Can I start, sir? Ah. Good. Thank you very much, Jain sir. The pleasure of working with you is only increasing day to day. And I am very happy that divine grace we are writing very well. और अच्छी तरह से आराम से रिलैक्सली बात करेंगे तो अच्छा लगता है। और इसमें मेरा जो बैकग्राउंड है, फार्माकोलॉजी फ्रॉम मेडिकल मार्केटिंग फ्रॉम वेलनेस वगैरह, ये थोड़ा सा अलग इमेज और अलग प्रोजेक्शन रहेगा, which is very good. I think Jain साहब and I are getting on very well, and hopefully in future we will be doing better things and bigger and other more challenging topics. Okay. Now, अभी ये जो word है procrastination, itself tongue twister. और many people don't appreciate the importance of this, क्योंकि nothing concrete is visible when we talk about procrastination. लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, वो सब्जेक्ट को खींचता है, बोर करता है। Procrastination बोला तो सब्जेक्ट को खींचता है और बोर करता है, but that is not the full picture. The full picture has a lot of things to do with the way our brain is functioning. The procrastination के अंदर brain को involve करना, I think we are among the first ones to do that, and we can correct it. At the same time, many things cannot be corrected. Let us see how the whole thing is as of now, how it stands. So, next slide, please. ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, हालांकि वो टंग ट्विस्टर है, उसको हम थोड़ा ब्रेकअप करके यू कैन सी द मीनिंग। प्रो बोले तो फॉरवर्ड, आगे आगे वाली बात, आगे फॉरवर्ड लुकिंग वगैरह, प्रो इज फॉरवर्ड। और क्रेस्टिनेट जो है, विच इज एक्चुअली टुमारो, इट इज अ लैटिन कम ग्रीक डिलीवरी of what normally goes in psychology. So procrastinate relates to tomorrow. So every time you postpone something to tomorrow, then you are doing procrastination. हमें उससे वंचित रहना। और इसमें दूसरी बात यह है कि the amount of time we spend procrastinating is huge. In fact, it is more than the 8 hours that sleep is recommended for us, and 8 hours of other types of activity and relaxation are meant for. तो किसी ने कहा कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन से कोई क्या लेना देना? You have to tell him that the amount of time we spend is huge, is enormous. So if you control procrastination, you are saving time, and you are improving productivity, and you are giving different perspective to people. This is what we have to see. Next slide, please. अच्छा, अभी ये जो पिक्चर है, इसके अंदर अपना ब्रेन का ओवरऑल लेआउट दिखाया जाता है। एकदम टॉप में, राइट ऑन टॉप, यू सी व्हाट इज नोन एज prefrontal cortex. The cerebral cortex is the topmost part of brain, the topmost part of the entire living organism. And उससे भी आगे prefrontal जब आएगा, that will decide your personality, your value system, your judgment, your emotions, your relationship, सब prefrontal cortex में आता है। हालांकि
Even if you knock off prefrontal cortex, you can live. It's an idea, it has to be, life-saving होना चाहिए for importance ऐसी बात नहीं है, because our personality and our take home a lot depends upon prefrontal cortex. Next slide, please. इसका कॉन्ट्रास्ट है अमिगडाला. आपको शायद याद होगा कि हमने अमिगडाला के बारे में बात की, काफी लेंथ हमने बात की, क्योंकि अमिगडाला जो है वो इमोशनल ब्रेन, prefrontal cortex is a rational brain, amygdala is an emotional brain. Now if I don't like something, say I go into a restaurant and I don't like the way the chairs are arranged, I get upset. क्या बनाया? That will be whose job? Amygdala's job. So amygdala is an emotional responding brain, and many times the action and the feedback etc. are proved. Next slide, please. So हमें amygdala और prefrontal cortex में जो झगड़ा चल रहा है उसको रिजॉल्व करना है. So we call it a civil war. अपने ब्रेन के अंदर ही एक सिविल वॉर होता है. Civil war, as you know, the American famous civil war in which Abraham Lincoln fought and beat the southern states, and he established United States properly. तो कभी सिविल वॉर बोलेंगे तो अब्राहम लिंकन का मेमोरी याद में आएगी अपने को. Civil war is going on day in and day out, year in and year out, and it goes on and on. But we don't appreciate the importance of civil war till we come to a crunch. तो इस क्रंच में हमने अब्राहम लिंकन का फोटो लगाया कि because this civil war between prefrontal cortex and amygdala is as important as the civil war that the Americans fought. Now, if you know how to control the civil war, your brain function can improve tremendously. And किसी ने इसको अभी तक emphasize नहीं किया है, which is unfortunate because we only talk about emotions all the time, but we don't talk about the conflict between prefrontal cortex and amygdala, which is somehow not what the fancy of scientists and neurologists and neuroscientists. But हमें इसको ध्यान में रखना. Now this repeat. Civil war between prefrontal cortex and amygdala is as important as global civil war. So we should understand this better. And our productivity can improve tremendously. Next slide, please. So in short, आप यहाँ देखेंगे amygdala is part of what we call as limbic system. ये limbic system है जो वो emotional है, and आपका amygdala उसके अंदर आता है. Amygdala is part and parcel of the limbic system, and it is erratic, it is disorderly, and it is emotive. Emotion आ गया तो disorderly आ ही गया. Whenever we are emotionally disturbed, whether we are angry or we are very sad or we are depressed, तब amygdala काम पे आता है, and तब आपका productivity एकदम down हो जाता है. So we have to control amygdala. So amygdala hijack जो हम बोलते थे, उसका counterpart यही भी है. So if you don't manage your amygdala, your problem with procrastination will only increase. तो procrastination को control करना है तो आपको amygdala limbic system control करना है. Now prefrontal cortex in contrast is the executive cortex. तो एकदम सूट बूट पहन के टाइप पहन के ऐसा आके इफेक्ट कराने वाला करने वाला cortex है वो prefrontal cortex. Whereas amygdala is disorderly, emotive, कुछ गड़बड़ कर देगा, गलती हो जाएगी वगैरह वगैरह. Okay. Now executive type of orderly systematic controlling of the brain comes from prefrontal cortex. हम इनको इन दोनों को बैलेंस में रखते हैं. तो इनमें से इतना नेगेटिव है तो amygdala रखने को क्यों? amygdala को उड़ा दो, एक सर्जन स्नाइप लेके उसको काट दो. But unfortunately, if you do that, your overall functioning of the brain will be affected, and you will lose all humanness. ये भगवान ने अपने को ये बैलेंसिंग सिस्टम रखा है क्योंकि we want a properly balanced
brain reaction to things. Supposing there is an accident, car accident, right in front of our building. So you can't say, no, apna koi lena dena nahi. You have to stop your work, go there and help. Go positive side of the emotional reaction. But uska negative bhi ho sakta hai. Supposing there is some patra or stone pelting going on outside, you have to react differently. तो इन दोनों को बैलेंस में रखना है, और बैलेंस में रखने से इंडिविजुअल को अच्छा है, और इंडिविजुअल को अच्छा होने से इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, ऐसा ही कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी आल्सो improves. Now let us see how we can leverage this. So in short, repeat, your prefrontal cortex is very sophisticated, very small, very systematic, yeah, and that will manage the brain in a very nice, straight fashion. In contrast, amygdala, which is part of the limbic system, which is part of the emotive system, also plays a part in procrastination. So in दोनों को balance करना. That is why it is important. I'm taking time to explain the things to you because if somebody is suffering from procrastination, you can't simply say, "अरे तो सब इसके दिमाग के अंदर है, it is not correct, it is not true, ये बकवास है." ऐसे attitude देने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि unless you look at amygdala and prefrontal cortex in a very scientific manner, आपका problem रहेगा. Problem रहने से आपका productivity कम हो जाएगा और overall personality negative है. Let us see. Next slide, please. Now, procrastination has a genetic factor as well as acquired factor. Now, people don't realize that ये genetic है. Genetic कैसा? तो amygdala कैसा काम करता है, prefrontal cortex कैसा काम करता है, वो सब डिसाइड करने वाला आपके genetics है, आपके DNA है, आपके brain के अंदर, आपके हर एक टिश्यू में वो जेनेटिक इम्प्रिंट होता है, उसके हिसाब से रिएक्शन होता है, वो जेनेटिक इज, पर उसको कंट्रोल करना not possible at all because there is a family background. Your family background will decide what you do, how you do. So for example, even your skin color is decided by genetics. You can't change it just like that. तो हमको उसको समझना चाहिए. Family background genetic होता है, and that starts showing in childhood. इन दोनों का जो पैम्पर्ड चाइल्डहुड होता है, some families में ऐसा है कि they got the money and the influence, they want to keep their children very happy and very everything. In the bargain they pamper the child. उसको कुछ टॉय बनता है, चलो अभी ले, तो कोई गाड़ी चलाने को चलो अभी ले. This kind of pampering of childhood is very bad for the child and very bad for the parents. And this is where your procrastination enters the picture in a big way. The same child will say, मेरे को आज कुछ नहीं करने का, मेरे को सोने का. That is nothing but laziness. That also is going to decide your procrastination. And more recently, in the last few years, social media का जो influence है, is tremendous. And nowadays people are actually beginning to realize that social media is only mostly negatively controlled by the person, and nobody is controlling it because there is a lot of advertisement money. तो इतना advertisement का पैसा पड़ा हुआ है, वो सब social media के अंदर आता है, और वो सब आपके personality के अंदर आकर घुसेगा. So social media को पैसा control करना is becoming a very big problem. Even yesterday there were few television debates. और समाज में इतने सारे negatives चल रहे हैं. How do you manage that? Social media control करना चाहिए. When somebody said, यार ये democracy है, freedom of expression है, इसको कैसे control करें? तो control करना ही पड़ेगा. If you don't control social media, rightly or wrongly, you are heading for trouble. You are inviting trouble. तो hopefully आने वाले 5-10 साल में social media का control भी जरा improve होगा. और इसमें artificial intelligence की बहुत important role है. And many of the social filtering that we do can be managed by social media database centers. So all that negativism will not come into your brain. It will be filtered outside before it enters the brain. ऐसा एक chance है, which will be good news. But the politicians won't allow this to happen because politicians want to play with danger. Okay? So आपका जो impulsive, unplanned work style होता है, those people will be more prone to
get into procrastination. आपके घर के अंदर if somebody wants to, if it was a child, if a boy or a girl wants to study hard for MBBS exam or law or some other type of exam, and if you keep on disturbing the child with impulsive, unplanned work style, then the child is not going to pass with good grades. The child is not going to get admission in good schools and colleges. So procrastination को control करना, it is a duty of the parents. And many of the parents don't know how to do it because we don't have the software yet. अगर ये software तो जरूर आने वाला है based on artificial intelligence. And अगर वो आ जाएगा, so just like you control your television and radio programs, you can even control your social media programs right inside your brain, right inside your household. Let us hope that it comes and that effect is carried through in the positive sense. वो positive रखना पड़ेगा. Otherwise, others will come and disturb the entire setup of what you have done. वो बहुत नकारात्मक हो जाएगा. ऐसा. So ये सब aspects हमें ध्यान में रखना है. Next slide, please. तो procrastination में क्या होता है? In short, कोई लड़का हो, basically students के ऊपर बोला जाता है. This true for adults also. वो कुछ टारगेट रखेंगे. अरे मेरे को मार्च अप्रैल तक मेरे को ये काम होना चाहिए. मार्च अप्रैल तक काम होना चाहिए. आप जनवरी में हो. अरे यार अभी जनवरी है, मार्च अप्रैल बहुत टाइम है. अभी काय तो तुम बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह बोलता रहता है. तो ऐसा करने से क्या होता है? If you don't start controlling early enough, you have to control things. Otherwise, आपको towards the very end of the project or something, you will not be able to control anything at all. तो इसलिए हमको daily target रखना पड़ता है. If not daily, at least weekly target रखना पड़ता है. इसके अंदर you will agree with the concerned person. तो मेरे को biology इतना पढ़ना है, मेरे को इतना chartered accountancy का feedback देना है. You break it into smaller pieces. You break it into weekly pieces and weekly review लेकर के आप ठीक तरह से आगे जा सकते हैं और direction of your effort should be proper. Otherwise, what will happen? You sleep till the very last minute. ऐसा ही होता है 99%. Whether it is in job or in education, the problem is till the very last day. अरे दिल्ली दूर है. History statement in Delhi. You know that I forget the name of the Sultan. Say दिल्ली दूर है. दिल्ली बहुत दूर है करके वो आराम कर रहा है. But Delhi suddenly comes and hits him. तो दिल्ली दूर रास्ते नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए जो डिसिप्लिन प्रोग्राम है वो कस्टमाइज प्रोग्राम बना के उसको घर के अंदर ही माँ बाप के सपोर्ट के लेकर ही करना है. एंड इफ यू डू दैट वेरी सिंसियरली देन प्रोक्रेस्टिनेशन का एक आंसर वहाँ मिल सकता है. टुडे इट इज नॉट देयर बट इट विल 100% कम बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी नाइसली पुट टू यूज. So इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस है और एक्सपर्ट सपोर्ट पर्सन हैं, तो उसका अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, नो सॉरी, गो बैक टू द प्रीवियस वन प्लीज. थैंक यू. नाउ अपना वर्क स्पेस क्लटर रखने से हमको बहुत नुकसान होता है. मोस्ट ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेटर्स have a table, working table, which is absolutely a mess. तो वो लड़का person concerned will look at it and will say, यार यहाँ पे कैसा काम करेगा? It is all clutter, you know, it is all बकवास and it is all nonsense. तो इसको आपको डील करने के लिए आपको uncluttered work space की जरूरत है, ताकि वो ठीक तरह से अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन वे आप काम करने को शुरू करेंगे physically with the table. And later on, you get into the habit of uncluttering your mind. Uncluttering your mind is the trick. भले आपके सामने टेबल हो या ना हो, लैपटॉप हो या ना हो, आपको खुद के माइंड को अनक्लटर करने का तरीका सीखना चाहिए. और फॉर दैट थिंग्स आर अवेलेबल. लेट मी रिपीट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना यूज क्यों होता है? It can decide very favorably the careers of crores of children and even teachers. और टीचर्स और चिल्ड्रन का माइंड का अनक्लटरिंग तो हो जाए, then you are the king. You are literally purifying their actions and thoughts and everything, which is very good. And
whosoever is there, whether it be the parent, mother or father or teacher or anybody, if you take a very disciplinarian view, if you make it look like a military drill कर दिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं होता. On the contrary, military drill कराने से वो repulsive हो जाता. So in the army and the armed forces it is okay because there you are in a system, very rigid control system. घर के अंदर अगर हम ये सब करना शुरू करेंगे तो घर के अंदर का atmosphere बिगड़ जाता है. And therefore, the teacher or the parents will have to learn to balance. Have to learn to balance toughness with softness. पूरे के पूरे tough करते रहेंगे तो लड़का पढ़ेगा नहीं. Your executives also won't respond. Your executives are very defined. Military drill आपको उनको लगा देंगे तो it's not that they will be okay for forever. 5 मिनट का काम करेंगे उसके बाद वो पूरा negative हो जाएगा. हमें ये balancing act सीखना. How do you do the balancing of tough versus soft? Again, educationists will enter and artificial intelligence people are entering in a very nice, very big, very positive way. Next slide, please. अभी पार्किंसंस लॉ करके एक लॉ है ना, उसमें ऐसा बोला जाता है कि your work will expand to fill the allotted time. Supposing at this very moment we are sitting and discussing, procrastination. We are looking at how to organize our study, how to organize our work. And if you tell somebody, चलो तो इसके ऊपर रिपोर्ट बना के मेरे को अगले महीने को दे दो. क्या करना है? इसके ऊपर रिपोर्ट बना के मेरे को अगले महीने को दो. ऐसा हम बोल के उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? कुछ होगा. और अगले महीने के नजदीक आते आते लोग उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे. And if you give 6 months, the work will expand, but then output ठीक नहीं रहेगा. So work expanding to fill the allotted time. एक ही काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं और more or less the same thing can be done in 40 minutes, 50 minutes. And the more time you give, the more expansion of your work will be there, which is only खींचा-खींची. Effective नहीं रहता है, punch नहीं रहता है. तो पार्किंसंस लॉ में ऐसा दिया जाता है कि don't give too much of allotted time, and then the quality of work will suffer because वो एक ही काम जो है उसको खींच के काम किया जाएगा तो उसके अंदर का quality of output नहीं रहेगा. So this is a common expression in most corporates. Corporate में क्या है? Supposing you are given a sales deadline, तो बोलेगा by December 24th, I want a full report on how many injections you have sold, how many process and other documents have you produced. ऐसा करके आप उनको छोड़ दिया and you are in Jain, Feb, March and you are waiting till the end of the quarter. फिर वो उसमें कोई मजा नहीं रहेगा. The work will become dull and people will waste their time and they will just खींची करके काम को बढ़ाएंगे. So Parkinson's law is observed very, very meticulously in corporate executive life. What is the trick to give the exact balance of urgency versus more relaxed output? So that will come only with experience, and that balancing act is absolutely vital for the success of a manager. ढीला भी नहीं छोड़ना है too much. If you make it too tight, then you say, there is not enough time for me to prepare the report. मेरे को All India Institute में एक report देना है, and you give me just 3 days. तो उसमें half the time will go and travel only. तो इतना tight रखने से there will be rebellion. Very tight work conditions will lead to rebellion. एक दिन 2 दिन आपका आदमी काम करेगा, चौथा 5वां दिन करेगा नहीं. And you simply say ये तो बकवास है. And the reverse is also true. Okay, एकदम खींचना, एकदम छोड़ना, एकदम टाइट करना, वो आपके हाथ के अंदर है. But that is where the experience matters. Now, repeat, with artificial intelligence, much of your experience-related constraints you do. Today, gray hair has a value. So, if you are a senior person with a lot of experience and if you have gray hair, you gain respect. But wait and see, in the next few years, your gray hair respect will be gone because all the job will be taken over by artificial intelligence.
तो आपको उसके साथ साथ compete करना है. And your procrastination will be better controlled by machines than yourself. Your job is also at stake, so be careful. And more time we give, the more time we waste. And the less time we give, the increase in productivity can be good, but there you have to learn to draw the line. A बहुत important aspect there, and this is going to come more and more in future. And this tightrope walking or balancing will become a very, very vital component of deciding the workspace and work content. So next slide, please. So more or less same, more time, less effort needed, but if you overdo it, you will mess up the whole thing. If you do less time, more effort will be needed, and the reverse of what we said earlier will apply. Next slide, please. And finally, or more or less finally, perfection is the mother of procrastination. Now there are some families, आपने Sound of Music देखा होगा, which is a very old picture. Sound of Music में, the father of those 7 or 8 children is an army guy. He's a perfectionist. He will say, मेरे को ऐसा ही चाहिए. So supposing a child keeps a tea cup somewhere 2 feet away, he'll start shouting at me. क्या ऐसा क्या रखा है? 2 फुट के आगे रखा है, उसको नजदीक रखना चाहिए. हर एक चीज के ऊपर he will find the fault and then start shouting. All because of his military background. वो मिलिट्री में इतना करके काम करते उसको सभी चीजों को ऑर्डर देने की आदत पड़ती है. मिलिट्री में सभी ऑर्डर ही होता है. लेफ्ट हैंड इज आल्सो ऑर्डर, राइट हैंड इज ऑर्डर, अबाउट हैंड इज ऑर्डर. सो लाइफ इज फुल ऑफ ऑर्डर्स. अगर आप ऐसा करते जाएंगे एंड यू विल से आई एम डूइंग इट बिकॉज़ आई वांट टू बी परफेक्ट, परफेक्शनिज्म वो नहीं चलता. अगर चाहेंगे तो आप साउंड ऑफ म्यूजिक को दोबारा देख लीजिए. हाउ इवन एट होम with the best of intentions, mind you, with the best of intentions, perfectionism is dangerous. And there is rebellion, there is hatred, and there is non-compliance, etc. So, ये ध्यान में रखना है. जब हम Parkinson's law use करते हैं, otherwise we plan work, हमें balancing बहुत जरूरी है. Next slide, please. So, this is where I thought I could share some thoughts with you. Most importantly, now with this artificial intelligence coming and with better systems of managing, education and even non-education, executive function maybe where there is a lot of quantitative data. Somebody will say, what is the market share of this in Bangalore? What is the growth rate of this in Guwahati? ये सब आपको फटाक करके AI से मिल जाता है, artificial intelligence से. वो सब प्लान करने के लिए आपको Parkinson's law लेके आएगा, आ रहा है. और आते हैं तो you will be competing with machinery, software, but it's good. Many times it can help you. So I thought of sharing this with you, and Jain sir has been extremely kind as always. And whatever I am sharing with you may or may not be published, but much of it is published indirectly. आपको direct publication नहीं मिलेगा, indirect बहुत सारे publication. और इसमें theory में फंस के रहने में कोई मतलब नहीं है. We have to concentrate on our work. If sales is your area, you work on sales. If research is your area, you work on research. If fine arts is your area, you work on fine arts. But हर एक के अंदर हमको ये support ले करके in a very professional way आगे जाना बहुत जरूरी है. And in the coming 10, 15, 20 years, we'll only be seeing that. So thank you, sir, for letting me share my thoughts with you. I look forward to maybe the next occasion. Thank you. Thank you, Doctor, so much for your hello. आ रहा है आवाज. Thank you, Doctor, for your talk on procrastination. What I have understood is people are just one lazy. They don't have reason why should they work. Second is जब सब मेरा हो जाएगा तब चालू करूंगा. तो बहुत सारे काम वो लोग कुछ पूरा होने के बाद करना चाहते हैं. तो कभी लाइफ में काम तो कोई कभी भी ऐसा दिन नहीं आता है कि आज रिलैक्स है, तो वो होता नहीं है. और जैसे आपने परफेक्शन का बात किया कि परफेक्शन की वजह से भी बहुत अच्छा करूंगा लेकिन करता कुछ नहीं है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने बात किया, वो अच्छा चीज है, लेकिन
हमको हमारे विल पावर से काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपने पे रूल करने देना नहीं चाहिए। हम रूलर है, तो वी शुड डिसाइड हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। So anyway, it was a nice session talking to you, doctor. Thank you so much, and we will